Hi viewers, I have made many videos on major accidents involving huge number of wagons, but there are also some typical yard derailments of very small magnitude involving 2, 3, 4 rail lengths, 2, 3, 4 coaches or wagons. A similar accident of a coaching stock occurred a few days back in one of the northern railway yard. So, how to deal with these small accidents, yard derailments and all? Generally, here the gauge level percent these normally do not matter. These are certain type of accidents which need a very logistic approach involving technical parameters and operational features. क्योंकि यार्ड में 8-10 कोच को लेके कोई शंटिंग कर रही है, उस दौरान अगर कोई गाड़ी गिर जाए तो एक क्या होता है कि आवाज उठती है बफर एंटेंगलमेंट। भाई इसके पहले भी तो चल रही थी, बफर एंटेंगलमेंट कहाँ से आ गई? और कौन कहता है, किसने देखा है कि बफर एंटेंगलमेंट जो हुई है, वेदर इट वाज अ इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंट और एक्सीडेंट अगर ड्यू टू बफर एंटेंगलमेंट? So normally we have studied from its mean position or center position in coaching stock, there should not be a displacement of more than 38 mm in any direction. So similarly, आइए यार्ड डिरेलमेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, लेट्स वर्क आउट। सो ये है डिरेल कोच जो इन्वॉल्व हुआ था, एंड वी कैन सी this got a hit, and we always need to watch this plunger. This is a casing, इसके अंदर स्प्रिंग होते हैं, कॉइल स्प्रिंग्स होते हैं या इलास्टोमेरिक टाइप स्प्रिंग्स होते हैं, वो भी कंप्रेस होते हैं to absorb the shock of bump, and these move to and fro, और एक सर्टेन लिमिट तक जब ये कंप्रेस होता तब ये गाड़ी हिलती है, ये ध्यान रखिएगा, because it has got a spring inside. So this is a telescopic movement. So जैसे इसको push लगेगी ना, तो it will compress and then make this coach to move this way. और similarly इसके other side में भी, inside में भी there is a set of springs. So you can have that drawing anywhere, you can find in any manual. Of course, this time I have not inserted here, but then just keep in mind that on both sides, for pull and for push, there are springs. And further to this, then, because it was 1 or 2 coaches, so this is the rough sketch. It was traveling like this way, yeah, so as a working and वो सारा यहाँ पे derailment हुआ। थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना, you will get everything which I want to explain. या नॉर्मली जो मैंने एक वर्ड यूज किया ना, ऑपरेशनल फीचर्स, इसमें लगभग बहुत ज़्यादा कसूर ऐसे कुछ नहीं होता, बट दीज आर समटाइम्स सर्कमस्टेंशियल। अब ये थी इसकी रीडिंग, 2 पूरी तो नहीं ली गई, बट देन दिस वाज व्हाटसोएवर दे हैव टेकन द रीडिंग्स, एंड दिस इज द बफर हाइट, और ये आपका बफर स्टॉक का जो लेंथ वगैरह है वो ये है,
जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला सॉरी। सो 1105, 1111 एंड ऐसे ही करके जब हम ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है। And anything above 1105 in empty condition makes it to fall under rejection. आइए आगे देखते हैं। ये ऐसी कंडीशन क्यों आई? हालांकि पूरे तो मेजरमेंट्स नहीं थे, बट देन हियर the primary spring were of the range of 277 and 297, if I can read it correctly because it's in very small font, and the free height is in the range of 365, 366. Okay. So this is the range, working range. So this is minus 3 means 283 to 293. Minus 3, sorry, 286 to 293. So this is 277 and this is something same range. So we can see the difference over here. So that means the height obtained is by inserting extra amount of backing under the coil spring. So the total height उसकी जो होती है वो 295 से ज़्यादा नहीं होती. This has not been recorded. This is not recorded. वहाँ हमको ध्यान देना है, एक वो हमसे चूक हुई है. While taking the measurements, we need to have the total. And let us see further. ये जो आ रही है ना हाइट, ये मैच नहीं कर रही है. और नॉन ACICF में जो टाइप ऑफ स्प्रिंग यूज होती है, दिस इज F01006 और इसका जो कोड है A01 रहता है. और A01 का जो रेंज है, दिस इज 279 to 295, 279 to 284 में येलो, एंड दिस इज द क्लासिफिकेशन. और C है 295 मैक्सिमम तक है. तो हम मान के चलते हैं कि ये जो रेंज दी हुई है, दिस हैज बीन विद द डिफरेंस ऑफ 5 mm हैज बीन क्लासिफाइड इनटू A, B एंड C. हालांकि कोई कलर अपने को वहां में दिखाई नहीं दिया था. Then we can have these things from the testing parameters whatsoever have been given. So ये टेबल में भी सही दिया हुआ है. This is the table which is used for testing of the springs as well. And we can see here, this is the spring height. अब सस्पेंशन सिस्टम हमेशा ही हम लोगों को जो है it gives this thing, and the maximum buffer height here as per this chart is 1104 plus 0 and minus 10. So this is as per table number 1.6. अब होता है क्या, ये है उसका स्पीड चार्ट जो हमें दिया गया है. एंड अब आप जो लास्ट पोर्शन है, यहाँ से वी कैन सी दैट देयर इज अप एंड डाउन. हालांकि व्हाट आई प्रेफर इज ऑलवेज पर सेकेंड, लेकिन ये 2-3 मिनट वाला दिया हुआ है. देखिए यहाँ 449 से 13 एंड देन 450 से 10. तो ये मतलब उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता. वी नीड पर सेकेंड चार्ट, तो उससे ज़्यादा क्लियर होता है. बट इवन दो we can have a fair look that see what has happened. At that time there is a sharp increase of speed. I am not saying overspeed. It's not overspeed at all. It's something like pushing up the speed for the purpose of shunting. मान लो एक साइड से निकल के आया है और दूसरी साइड उसने जाना है, मतलब विड्रॉ किया है and now again it is going back. तो उस टाइम में क्या हालत होती है वो मैं आपको बता. आइए इसको थोड़ा सा लॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. इन सच केसेस हाउ टू द कोच गेट्स थ्रोन अवे
with a distance of about 300, 400 from gaze base. I mean, the wheel drops away from the gaze base. So this is a train, say for instance, doing the shunting work, and say it is drawing and now it is in pushing. Since that locomotive was also in a pushing mode, so what will happen? This engine will have a push and it will compress these wagons to push in the direction of the arrow shown, while uh, these wagons are at a standstill, so to say, and this will offer a force in the opposite side, and this will result into compression of the buffers. So if this is the length now, when initial push is exerted by way of notching up by the loco pilot, तो इनका जो है कंप्रेशन आ जाता है, ये कंप्रेशन में आ जाएगा, ये ओपनिंग में आ जाएगा, फिर ये साइड वाले जो है इनर वाले जो है कंप्रेशन में आते हैं कर्व के, आउटर वाले ओपनिंग हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि एक साइड की यहाँ में इनर साइड में एक फोर्स सी बन जाती है which has a tendency now because these are still at a standstill और यहाँ से पुश गई, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि मान लीजिए सडन आपकी इंक्रीज ऑफ ये हुई है स्पीड, आई एम नॉट सेइंग ओवर स्पीड, मीन he has opened the notch and now this starts pushing. So this starts pushing from this end and these are at a standstill offering their inertia, and hence a compression is created which, if being so high, will lead the wagon to jump outside this way, jump कर जाएगी, and this is what has happened actually अगर हम देखते हैं. And added features can be, suppose there is a difference of buffer height. So the line of transmissibility of forces will not be in the same line, but it will have a distance between these two forces. And this will result in a moment of couple formed. This couple of forces will form a moment and the arrow. Now suppose this is pushing this way from left to right of your screen, I mean this way, and this force is this way, and the line of action is separated by distance h, then this is the moment. और ये pushing अगर है तो ये high है, ये low है, then it will cause lifting of this wheel. Or otherwise, even sometimes this is not the case. Let us say this is not the case. The force so generated will throw out towards the outer side of the curve. So this sort of a thing can happen, and it may not be very, you know, a situation where you will see ये गॉज लेवल खराब है या बरसेन खराब है, ये वो है. और समटाइम्स जो मैंने पहले भी जिक्र किया वी से कि इसकी बफर एंटेंगलमेंट हो गई है, तो बफर एंटेंगलमेंट गिरने के बाद हुई है, पहले हुई, दिस इज आल्सो टू बी सीन बिकॉज सदियों से चला आ रहा है ये यार्ड, ये अलाइनमेंट. तो फॉर अ पर्टिकुलर केस ऑफ बफर एंटेंगलमेंट होने के अदर रीजंस भी होते हैं, चाहे उसकी हाइट में डिफरेंस है या मतलब एक साइड ऊंचा नीचा है. सो दैट हैज टू बी सीन थॉरोली with respect to the suspension system and all. So this is what I wanted to explain, which I understood myself about this derailment. I thought of sharing with you. You may have a totally different opinion. Hardly matters. This is my personal view. For paying your valuable time to watch this video, if this is helpful in any way, please do like, share, subscribe the channel. This channel is made for you only as PV engineers in whatsoever capacity. We have to go in logically, we have to go in with the data, we have to go in with the nature of accident, we have to see the drop of the wheel, whether sudden or mounting, and so these are all factors which one learns through experience, and the more you face such accidents, the more one learns. So right viewers, thank you once again for watching. Keep watching. Do give me a like and a comment.
Thank you once again.